what's happening in Bangladesh. In 2006, Muhammad Yunus, the man who's now running the interim Bangladesh government, was awarded the Nobel Peace Prize. We are now in 2024 and we asked him today, is this his version of peace? Ever since he took over as the chief advisor of the Bangladesh government, the minority community, especially Hindus in Bangladesh, are under siege. Ever since Hasina's ouster, Hindus have been fighting for their lives, their identity. Their Attorney General wants the word secular to be removed from their constitution, but that's not all. Today, the man you see on your screens, viewers, ISKCON priest Chinmoy Krishna is languishing in jail. He has a sedition case filed against him. The terrorists are roaming free in Bangladesh. Now, there's an ecosystem in this country that says all eyes on Gaza, all eyes on Rafah. They have turned a blind eye on Dhaka. Why are they doing it? That's the debate. Professor Monojit Mondal now joining us. Rest of our panelists continue. Dr. Ranganathan, who will say all eyes on Dhaka? I think I've said this before, that I've had enough criticizing the Islamists and the jihadis, and clearly those radicals who are out to destroy every other semblance of either the democratic process or respect for people who do not belong to the religion of Islam. I've stopped blaming them. I think we need to look inwards. We look at ourselves, and we must realize that, as you said, those Hindus, tens of thousands of Hindus are running away from certain death. It's a simple question. Where are they going once they are running away? They have nowhere to go. Pranesh, the fact of the matter is that we as Indians aren't doing anything for them except being on Twitter or on programs where we discuss this. Have we made even a single detention or a relief camp this side of the border? All what we can do is express our sympathy or, some residual words of some solace to be given to them. Other than that, some outrage, some protest. Where are the tangible actions that our government has taken to save the Hindus of Bangladesh? I don't know of any. My good friend Tuhin can inform us, and I would be very grateful if he does. Have we made a single camp this side of the border? Tuhin Sinha, answer that. Are you waiting for Donald Trump to take up this issue? No, we are very closely monitoring the situation. In fact, at every given, every time there has been a flare-up, there has been a statement from the External Affairs Ministry. We are closely monitoring. See, what Bangladesh is witnessing today is a demographic carnage. It is probably witnessing the most shameless exhibition of Islamist exclusivism. And India is prepared to handle that. We will not let them get away with it. The point is, the present Chief Advisor of Bangladesh, Muhammad Yunus, with his utterances has only encouraged the jihadis. On two occasions, first in September, he said, this is not, he tried to make it seem that there is no communal angle to it, and later called it an exaggeration. So the highest levels of our government have been in touch with Bangladeshi authorities to ensure that this is not, that they take serious cognizance of the situation. But yes, also the fact that the judiciary today did not give the bail to the ISKCON mosque a second time around for no fault of his, that raises serious concerns over all institutions working in the country over there. So we are Dr. Ranganathan, what he meant was that you must now go beyond these strongly worded statements. It is very well to acknowledge the problem. And kudos to the government for calling out what the problem is. At least the statement says that the Hindus are under attack. The opposition can't even get itself to utter that. Abdul Razak Khan, I have a simple question to ask. Between Zakir Naik and Muhammad Yunus, who is more dangerous? Please. Sir, Muslims of India have been facing a similar situation since 2014 and nobody gives a eye. I am saying their houses are at least safe in Bangladesh. They are not being lynched in broad daylight. They are not being forced to chant Jai Shri Ram. Come on, sir, they are living in peace. It is more than exaggeration what the whole world is up to today. I am saying, look at the plight of Muslims. Look at the number of people you have arrested, first of all. What about Zakir Naik?
India could not establish any proof and give it to Malaysia so that he gets deported back to India. The Prime Minister is time and again asking, even during his visit to India, he asked, if there is any proof evidence, please provide. We will send him back to India. But simply just because he is an Islamic preacher, he was a victim of thought. Now talk about Maulana Salman Azhari. 1 minute, 1 minute, Abdul Razak Khan, 1 minute, sir, 1 minute. You said that the Muslims are facing similar issues here and that Hindus must be thankful that they're not being lynched in Bangladesh, that their houses are safe. हर्षवर्धन जी, अगर कोई ऐसा तर्क देगा आपको तो आप उनसे क्या कहेंगे? प्रणेश, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस इशू है। भारत का मुसलमान अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खुश हो रहा है कि थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और होना चाहिए, तो इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कुछ नहीं हो सकता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया के हर हिस्से से हिंदू भागेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? उन्हें तो वहीं खड़े रहना पड़ेगा, वो उनकी जमीन है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारतवर्ष से कटकर भले अलग हो गया, लेकिन वो हमारी जमीन है। और मुसलमान अगर पूरी दुनिया पर कब्जा करने की नीयत से आ रहा है तो ये इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप अमेरिका का शासन संभालेंगे तो उनको वो याद रहेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस में हिंदुओं का एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आता, भारत में रहने वाली पार्टियां, भारतीयों का वोट लेकर काम करने वाली पार्टियां, सत्ता में आने वाली पार्टियां, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। संसद में वो रेजोल्यूशन आया, मैं तो कह रहा हूं कि संसद सत्र शुरू हुआ है, दोबारा वो रेजोल्यूशन आना चाहिए जिसमें ये कहा जाना चाहिए और उसको बाकायदा ये देश को भी पता लगे कि इस रेजोल्यूशन पर जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध है, उस पर कौन कौन सी पार्टी क्या रुका, इस पर बाकायदा 2 दिन की बहस होनी चाहिए। भारत सरकार को इनिशिएट करना चाहिए, विदेश मंत्री को इस डिबेट को इनिशिएट करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसे एंड करना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इसमें शामिल होना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत की सरकार कैसे काम कर रही। और एमईए का स्टेटमेंट आया है, बहुत स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी संसद में इस तरह से चर्चा होनी ही चाहिए। आप कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें शामिल होने चाहिए, लेकिन पहले तो एक्सेप्ट तो कर लें, एक्नॉलेज तो कर लें। अभी तो वही एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया है ऑपोजिशन के पार्टी से। अब वो देखिए, अब्दुल रजाक खान कह रहे हैं कि वहां जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं इतने मैग्नानिमस हैं कि उन्होंने लिंचिंग तो नहीं की, घर तो नहीं जलाया। आनंद रंगनाथन, शुड यू अपलोड देम? No, I don't want to talk about, what has been said by Abdul Razak. Bigoted, communally bigoted, gloating at the misery of a fellow human being. But, that is expected of. मैं हर्षवर्धन जी ने जो कहा ना, मैं उस पर कहना चाहता हूं। मैं, लोग जानते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं आई एम नॉट बीइंग पैट्रनाइजिंग आउट। और जो उनका व्यू है वो बहुत लोगों का, मेरे मित्रों का भी व्यू है। पर मैं यही कहना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी, हमारी फैमिलीज नहीं वहां खड़े होकर कट रही हैं। जो वहां खड़े होकर कट रहे हैं उनसे पूछ के वो कहां जाना चाहते हैं। ये लिखित है, ये कोई वी आर रीइन्वेंट द व्हील इफ बिलीव दैट हिंदूज वुड बी सेफ इन इस्लामिक रिपब्लिक। आपने पाकिस्तान की हालत देखी, 1% हिंदूज भी नहीं है। बांग्लादेश जो अभी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है, 25% हिंदूज से लेकर अब वो 7% आ गया है। हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे। वहां तो खड़े रहेंगे तो कट के मर जाएंगे वहां पे हर्षवर्धन जी। Let's ask the CA doubters. Professor Mondal, will the denial end, sir? Will you open the doors? I have been consistently telling for the last 6-7 months, Bangladesh has remained the biggest failure of Mr. Modi government. Even now, they witnessed the fall of the friendly government. They are not doing anything for the persecuted people out there, and now even then they're not even summoning the High Commission of Bangladesh. Professor Mondal, if you believe the Hindus are persecuted, why are you opposing the CAA? It's a simple question. The government has taken, please,
Do not mislead the nation. The CA has limitation of 2014. So And you do say, not need no, the no, then refugees you to should be, say that we citizens support of the India. CA, CA is not and needed I am at all. backing you. I mean, And don't I am mislead. sure Dr. Ranganathan will back that stand that what is this? You know, this cutoff date of December 2014 is like a token. This must go, but before that, you must come out. For the Bangladeshi refugees No, Professor Mondal, sir, I want to applaud you. No, Professor Mondal, listen to me, sir, listen to me. Become an anchor on TV? No. Do you need CA for the Bangladeshis to become Indian? CA came in 2019. The Bangladeshis are becoming Indian citizens from 1971. Why are you opposing the CA then? Isn't CA for persecuted minorities? Because CA was specifically meant for certain communities. Which communities? For certain communities. Which communities? Which communities are being persecuted? Why do you include the Which communities are being persecuted? Professor Mondal, why don't you name the community? Name the community. Name the community. Read. I'm telling you, name the community. Did not. Which community are you talking I'm about? saying you did not. अरे आप बुलाते हो क्यों डिबेट करने के लिए? किस तरह का नॉनसेंसिकल डिबेट है? एक लाइन भी बोलने नहीं देते हो, आपको फ्रेंड को बोलने देते हो, हमेशा खुला छूट के. आप भी फ्रेंड है सर, प्रोफेसर मोंडल, आप भी फ्रेंड है. Don't waste my time. If yes, no. If I'm your friend, let me have my say. At least one line. I'm saying that we are all with the persecuted minorities of all countries, whether in Bangladesh or in Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, everywhere. But you have selectively chosen certain minorities in your CA. That's why you oppose. And take my word. You do not need CA for Bangladeshi refugees to be Indian citizen. That's been happening for 1971. So answer that quickly. From 1955, from the answer that question. It's a fair question he's asking. One on the cutoff date. No, if need be, the cutoff date will be waived off in the case of Bangladesh. You rest assured that to protect Hindus in Bangladesh, we will go all out. But at the same time, those Hindus who have chosen Bangladesh as their home and would still want to live there, it is the responsibility of the government to ensure that peace prevails over there. And that is why one should not encourage, complete exodus from Bangladesh of Hindus, because this would only encourage Islamist forces in Bangladesh. But any Hindu which is being persecuted, rest assured the government is out there to support him and would open the doors for him. वरुण पुरोहित जी, जो डॉक्टर रंगनाथन कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मनोजीत मंडल को तो एटलीस्ट उन्होंने इससे पिछले डिबेट में भी उन्होंने कहा था कि हमें कट ऑफ डेट से प्रॉब्लम है. उनको जब मैंने पूछा कि आप सीए सपोर्ट क्यों नहीं करते तो उसका जवाब नहीं देते. लेकिन चलिए, एक पॉइंट तो उन्होंने सही बोला कि कट ऑफ डेट आप हटा दीजिए. मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें तो लोग लिखने को भी तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है बांग्लादेश में. ये हेजिटेशन क्यों है? प्रणेश जी, सबसे पहले तो रंगनाथन जी ने बहुत बढ़िया बात कही. इमीडिएटली एक रिलीफ कैंप्स खोलने चाहिए बॉर्डर पे, जिससे हिंदुओं को कोई सुरक्षा मिल सके. और हर्षवर्धन जी ने बढ़िया बात की. संसद सत्र प्रारंभ हो गया. संसद सत्र में पूरा एक कलेक्टिवली सारी पार्टियां यूनानिमस प्रस्ताव पास करें जिससे कोई फर्क पड़े. और ये जो पेपर टाइगर है ना, 56 इंच के सीना है, लाल आंखें दिखाती थी चाइना को, और 4 ऐप बंद कर दिए थे, हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया. ये पाखंड और प्रोपोगंडा बंद करो, कुछ ना कुछ एक्शन करो. राजीव गांधी जी के जमाना याद होगा आपको. नेपाल ने चाइना से कुछ करना कोशिश करी थी तो नमक पानी बंद कर दिया था. पाकिस्तान के बॉर्डर पे फौजें लगाती थी रात को. तो आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई बांग्लादेश में कुछ करने में? रेस्ट अश्योर करे जा रहे हो कि 10 साल तक बैठे रहेगा रेस्ट अश्योर करता आदमी वहां जो परेशान हो रहा है? आप जब प्रश्न उठा सकते हो, संसद में कोई चीज लाते हो, आप उसका अगर कोई कांग्रेस विरोध करे या समर्थन नहीं करे बांग्लादेश की नीति में, जब आप कह सकते हो कांग्रेस ने ऐसे किया, तो अगर सरकार नहीं उठाएगी तो आप लोग नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? नहीं, अगर सरकार नहीं उठाएगी तो आप लोग नहीं उठाएंगे? अगर प्रियंका गांधी, एक मिनट, प्रियंका गांधी को सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं. वरुण जी देखिए, ऐसे मत बोलिए. अब वो प्रोफेसर मोंडल बोलेंगे कि ये फ्रेंड को बोलने देते हो, ये वो. मैं पूछ रहा हूं, प्रियंका गांधी को किसने कहा था? उन्होंने क्या ट्वीट किया था? ऑल आइज ऑन डॉक्टर रंगनाथन. वो प्रस्ताव सरकार लाई थी, वो इमेज उनको सरकार ने दिया था. अगर वो बोल सकती है ऑल आइज ऑन गाजा, तो ऑल आइज ऑन ढाका कहां है? जगह भी उतना ही लेगा, गाजा ढाका बड़ा भी नहीं है. डॉक्टर रंगनाथन, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो प्रणेश जी. नहीं, बिल्कुल. लेकिन मैं वरुण जी को
थैंक यू कहना चाहूंगा कि वरुण जी ने ये सहमत हैं, और मैं चाहूंगा कि जो आने वाला सत्र है पार्लियामेंट का जो चल रहा है उसमें कंस्ट्रक्टिवली वरुण जी और उनकी पार्टी सजेस्ट करे कि वी नीड रिलीफ एंड डिटेंशन कैंप्स दिस साइड। अरुण जी, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, आपने एकदम कहा, ये हमारे देश की बात। और मैं मनोजीत दा को ये बताना चाहता हूं 2015 और 2012 में The CPIM and the Congress passed a resolution where they demanded citizenship, Indian citizenship for the minorities of Bangladesh. Now, minorities cannot be Muslims, right? So, Manojit Da, then you were absolutely silent and you were for the citizenship. Now, suddenly when Modi brought in CAA, you started uproar and protest. But let's see, like you said, this is not about any political party. This is about the people who are suffering there, and every minute, the suffering is getting worse. Let's spare a thought for them and hope that the government and all political parties, they come together and take concrete steps. Gentlemen, I thank all of you for joining us on India Upfront. The news are on the other side.